StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गुड इवनिंग गाइस, माय नेम इज करमयोगी दिवाकर बोथरा। ऑफन आप लोगों ने सुना होगा सोशियोलॉजी ऑफ समथिंग। आज हम देखेंगे इकोनॉमिकल व्यू ऑफ सोशियोलॉजी ऑप्शनल। What exactly is the meaning of the topic? The meaning of the topic is like this. Many of the students are in a state of confusion many times before choosing an optional or before choosing a coaching institution. कंफ्यूजन रहता है, क्या वो सर्विसेज मिलेगी, क्या प्रोमिसेस फुलफिल्ड होंगे, एंड सो मेनी एंड सो फोर्थ। नॉट ओनली दोज पीपल हु आर having optional or are planning to take sociology as their optional, but generally any person who is largely preparing for civil services, just watch the 5 minutes of the lecture and I promise you that you will not able to resist the lecture and you will watch it till the end. Because normally when you apply something, it requires effort. And the same application which we at StudyIQ or the teachers are doing, the same thing you would be doing as far as your examination paper is concerned. आपको भी पेपर में अप्लाई करना है. Before starting this session, I would be very serious. What exactly is the meaning of this? Meditation एक किताब थी जहां पे मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं वेरिसिमस का मतलब most true and truthful. Anything which I'm going to say now would be absolutely on the basis of truth, absolutely on the basis of facts. Just like you promise, you take an oath when you are appearing in front of the judiciary, I'd be doing the same while appearing in front of you here at this particular platform. सबसे पहला, what we do not follow. अब जितने इकोनॉमिक थियरीज है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स है, मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को उठाया और हमारे कोर्स से इंटीग्रेट करके आपको समझा रहा हूं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज व्हिच वी हैव, व्हाट वी डू नॉट डू। पहला, वी डू नॉट फॉलो ए कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी क्या होती है? एन इकोनॉमी इन विच ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी सच एज स्टेट। स्टेट सब कुछ कंट्रोल करता है। इन अ वे इट्स अ फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप वुड बी अ बिग वर्ड, बट जस्ट in order to make an analogy, I'm making you understand this. State सब कुछ डिटरमाइन करता है। डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप बड़ा कम होता है, इनफैक्ट डेलीगेशन का भी स्कोप कम होता है। हमारे कोर्स के अंदर वी डू नॉट फॉलो कमांड इकोनॉमी. Our classes are absolutely democratic and they are based on the principles of dialectics. Dialectics originated in the writings of Plato, manufactured and interpreted in the writings of Hegel and further interpreted in the writings of Marx. डायलेक्टिक्स का ओरिजिनल मतलब था डिस्कशन। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, एनी नॉलेज कैन ओनली बी डेवलप थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स। जहां पे आप डिस्कस करते हो उससे नॉलेज और ज्ञान बढ़ता है। हर क्लास जो सोशियोलॉजी की है वो हर क्लास के अंदर दैट इज अ प्योर डिस्कशन। हर फ्राइडे को डाउट सेशंस लेते हैं। लास्ट फ्राइडे जो था जहां पे वी टुक अ क्लास ऑफ 4.5 hours सिर्फ स्टूडेंट्स के डाउट टैकल करने के लिए, बिकॉज आवर डेडिकेशन इज समथिंग विच इज अनमैच्ड, unquestionable. The passion has to be there in order to show that dedication. तो हम कमांड इकोनॉमी का रूल फॉलो नहीं करता है। You will have what in this course? Comparative advantage. What is the economic meaning of comparative advantage? Ability to produce a product relatively more efficiently than others. कि आप लोगों से कम दाम पे, बेटर क्वालिटी पे शायद प्रोड्यूस कर पा रहे हो, उसे बोलते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज इन कंपैरिजन टू योर फेलो बीइंग्स और कॉम्पिटिटर्स। आपको कैसे ये कंपैरेटिव एडवांटेज होती है? बिकॉज ऑफ द प्रिसाइजली हैंड क्राफ्टेड, इन फैक्ट हैंड रिटन नोट्स विच आवर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स एंड नो अदर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स दैट। द हैंड रिटन नोट is largely a copy paste of the entire lecture so that you don't have to see the lecture again and again in order to get an understanding by chance if you missed it in the class. सिर्फ हैंड रिटन नोट्स पढ़ना और सोशियोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ना, मैं ये दावे के साथ इस ओपन प्लेटफॉर्म के अंदर बोल रहा हूं। अगले महीने मेंस है, वी विल इवैल्यूएट के कम से कम मिनिमम में मिनिमम 70 to 80% पेपर इसी नोट से निकलना चाहिए। 10 और 20% की पॉसिबिलिटी, 100% प्रेडिक्शन कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है, चाहे आप वर्ल्ड की बेस्ट किताबें भी सारी क्यों ना पढ़ लो। तो you will always have a comparative advantage. You will never face credit crunch. Credit crunch क्या है इकोनॉमिक्स में? A sudden reduction in the availability of credit in banking system. जब कोई एक बच्चा एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, एक सॉलिड सा फेथ होता है यार। मान लिया शायद आज मटेरियलिज्म ज्यादा है, फेथ की वैल्यू कम हो गई है, आइडियलिज्म की वैल्यू कम हो गई है, बट स्टिल वो फेथ जब टूटता है ना, तो इनफैक्ट एक स्टूडेंट कंप्लीटली टूट सा जाता है। कई बार इस लेवल पे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो अपनी तैयारी को ही आगे परस्यू नहीं करना चाहता है। Many promises but do not cover the syllabus.
If they cover, you will face a content crunch in papers of topic, especially paper 2, especially work and economic life, specifically social change, religion. इनमें इतना ज्यादा क्रेडिट नहीं तो कंटेंट क्रंच होता है कि या तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन करने लगते हो आप, और जिसको आप विश्वास नहीं कर सकते उसको फॉलो नहीं कर पाते। और जब कंटेंट क्रंच होता है तो स्टूडेंट को कोर्स के बाद भी दर बदर भटकना पड़ता है। इफ आई एक्सप्लेन यू माई सिनेरियो, व्हेन आई जॉइंड अ कोचिंग इंस्टीट्यूशन, 60% ऑफ द सिलेबस वाज नॉट इवन टच्ड, फॉरगेट अबाउट कवरिंग इट। और उसके बाद फिर मुझे एक साल गैप देना पड़ा, और 2012 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टारगेट होने के कारण शायद आई कुड नॉट कन्वर्ट द फाइनल इंटरव्यू कॉल टू अ रैंक। शायद अगर 10 में अच्छे से सिलेबस कवर होता, 11 में पेपर देता, तो आज मैं पढ़ाने की जगह एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट चला रहा होता। मे बी आई वुड हैव रीच्ड अंडर सेक्रेटरी बाय नाउ। With us, you will never experience deflation. Deflation क्या होता है? A falling price of goods and services over a period of time. कई बार क्या होता है, इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यू बिकम द विक्टिम ऑफ क्वालिटी डिफ्लेशन। क्वालिटी धीरे 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 खत्म होती चली जाती है। थिंकर्स से स्टार्ट कर देते कोई लोग तो कि यहां से पढ़ना है, क्यों? उनका स्ट्रॉन्गेस्ट थिंकर है, कुछ डेमो क्लास बच्चों को दी जाती है, वो थिंकर्स की रहती है बहुत बढ़िया। आगे जाके धीरे धीरे देखते हो कि क्वालिटी डिफ्लेशन होने लगा है। There are topics which the faculty is not even able to express. Let me make it one thing very clear. I am not questioning the credibility of any faculty. Maybe because of their materialistic need, maybe because of their concerns of content, or maybe because of their respective reasons. What we often see is fact. Somebody would have to question this. और लास्ट में जाके स्टूडेंट फिर दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, लेकिन चलो पैसा होगा आपके पास, लेकिन वो टाइम वापस नहीं आएगा। दैट 6 months वेस्टेड इज कंप्लीटली वेस्टेड एंड यू आर 1 year बिहाइंड। और अगर मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखूं तो सिलेक्शन हो जाता है तो 1 year लेस सीनियर देन द अदर्स। Our biggest USP is that you would face externality. अब ये मीनिंग क्या होता है इकोनॉमिक्स में? Cost or benefit from any economic activity that is felt by a person not directly involved in that activity. कई एक्टिविटीज ऐसी होती है जो डायरेक्ट बेनिफिट के साथ साथ लैटेंट बेनिफिट भी देती है, जैसे आर के मर्टन बोलते हैं अपनी थियरी लैटेंट एंड मैनिफेस्ट में। तो जब सोशियोलॉजी यहां पे पढ़ते हो तो होता यह है कि सोशियोलॉजी की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ही यही होती है दैट इट हेल्प्स यू टू डेवलप पर्सपेक्टिव। इट गिव्स यू दोट एनालिटिकल एबिलिटीज व्हिच द पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी और फॉर दैट मैटर एनी अदर डिसिप्लिन डज नॉट हैव दैट कैपेसिटी टू गिव यू दैट analytical skills which sociology gives, because the entire sociology is nothing but a critical discipline, how the society is operating. तो इसके जो एक्सटर्नल बेनिफिट्स है, इट्स नॉट जस्ट विथ रेस्पेक्ट टू योर कोर्स मटेरियल ऑफ सोशियोलॉजी, बट इट्स रिपरकशन और इट्स रिपल इफेक्ट इज ऑफन फाउंड इवन इन योर जनरल स्टडीज पेपर, because the syllabus one way is covering it directly, other way is giving you the perspectives where you have the abilities to use the content. Coupled with this, ultimately you are going to live in this world, man. Whether you are into the services, whether you are outside the services, the knowledge of your society reaches to such an extent that for everything you have a logical explanation. Not only you start becoming more pluralistic in society, you start accepting, you become more tolerant, you start accepting diversities. Maybe these are the benefits which may not matter you right now, but over a period of time when you evolve in the phase of your life, you would feel that need. This is the batch which we are starting. From day after tomorrow, the syllabus would start. Join the batch. Right now, the discount sale is also going on. But yes, the lecture is yet not over. One sure thing you would see in your preparation when you join us is inflation. What is inflation? A situation in which not only the content would rise, but so would be the confidence, writing skills and analytical abilities. The magical sociological pill, when digested by a person, not only impacts the health of the person who has this, but also has a ripple effect on every facet of his life. तो आपके कंटेंट में, आपकी आंसर राइटिंग में, आपकी एनालिसिस के अंदर एनरिचमेंट होता है, बिकॉज अल्टीमेटली द रूट ऑफ एनी गुड कंटेंट और एनी गुड आंसर इज द एनालिटिकल एबिलिटीज, intellectual traits which you have, and that depends upon how you interpret things. And when you join this batch, you really feel that how we actually interpret. Example के तौर पे यहीं तक बता दे रहा हूं, मैंने सारी की सारी इकोनॉमिक थियरी सोशियोलॉजी के अंदर लगा के आपको एक्सप्लेन किया है. So it's not my just words, it is something which I'm already doing in front of you, and we do this with every sub part of our syllabus, whether it is paper 2 or whether it is paper 1. After you complete this course, you would not have to do quantitative easing. What is quantitative easing? The injection of new money, that is coaching in this context, test series into an economy, into your preparation.
आप एक बार कोचिंग करने के बाद न आपको उसके बाद कोई टेस्ट सीरीज करनी है, न आपको कोई दूसरी कोचिंग क्लास करनी है, और न ही आपको शायद किसी और किताब को पढ़ना है। जितना दिया जाए शिद्दत से, रिलीजियसली, इफ यू डू दैट, आई बेट ऑन इट। एंड सी एनीवेज, माय बेटिंग और नॉट बेटिंग इज समथिंग व्हिच डजंट मैटर। 15-20 दिन के बाद में मेंस आने वाला है, उसी पेपर में अगर मैंने ऑलमोस्ट 80% पेपर हमने क्रैक किया, तो यू आर हैविंग अ कॉन्फिडेंस कि यू कैन रिलाई ऑन दिस इवन द ईयर्स टू कम, because we have already done that. Again, I'll make a video jahan pe we are going to predict the 2023 sociology paper 1 as well. Do watch that video and then compare it how the paper came and what was our prediction, so that this is on the open platform where you people can judge by yourself rather than me telling about ki we are this and we are that. So you would never have to do a quantitative easing in your preparation. When student joins, we consider it as a debt. I personally feel that, and I promise you on that you will never feel that okay, I am violating these principles. I may violate any of these for that matter if you have to believe that, but I'll never violate this, because we consider students' fees not as a monetary income but as a form of debt. A debt which needs to be repaid, if not here, in the otherworldly aspects. A promise made by one party to another to pay back the loan. Here, obviously, you are not giving us the fees in order to repay you, but in order to give you that quality content for which you are trusting us. So you don't pay the fees, you have shown the trust, because your fees is not just the fees which you pay, it's the trust which you have built in us. And this is why, and this is where we are different, that we only operate on this. I purposefully focus on this, कि yes, student at the end of the course should not just be satisfied, should be flamboyantly satisfied. इससे आगे जाएं, our confidence in us and our pedagogy is because of the fiat money. क्या होता है? Form of money that is not backed by physical commodities such as gold, but gains its value from the confidence people have in it. So the confidence with which I am discussing this aspect with you, I am largely telling you the various features of the course, is because the students' confidence which you have shown us, and that is something I am highly obliged for, that you have shown the faith. You have helped us in changing the way the sociology is taught. But remember, we impose a tariff. Now, tariff is what? Surface? No. A tax imposed on imports to protect the domestic produce. ये होता है tariff. हम क्या tariff impose करते हैं? We impose a tariff where we want your commitment, we want your consistency, and we want your sheer hard work, because smart work only comes when you start working hard. मुझे dedication चाहिए कि आप daily एक आंसर लिखोगे. If you are dedicated to your success, goddamn, I am dedicated to your success more than you are. So if this is something which you really feel that yes, it builds a confidence, but still there are certain gut feeling के यार होगा कि नहीं होगा, तो एक और economic concept है default. If any day I do not follow the above principles present in front of you, and this video is openly present on open source, if any day I default in any of one single characteristics, then I, Karam Yogi Divakar Bothra, if not the StudyIQ promises, it's my personal promise that I would refund your fees back if any day you are able to prove that even an inch of other organizations' content is better than this. Even an inch of clarity is something which is lacking. Even a single subtopic of your syllabus, if it goes unpaid, unheeded, unattended, I would personally refund your fees back. And that is goddamn the confidence we have, because there are certain people who are guided solely by the passion. Sociology has remained a strong passion, and every word which I've discussed with you would be stood by on its literal meaning, not just an interpretation of it. And if you feel that yes, your life mein dekho, words jo hai may largely distract you, but the passion, but the eyes, the vibes never lies. If you still want to join our batch on the basis of these promises which I made and which I'm going to adhere by, then the batch have started. The batch closes on 1st September, but the syllabus is going to start from tomorrow itself. Do join the batch, and every sub part of your topic would be covered here. Further, we are right now having a Raksha Bandhan sale offer where at least you will get this 28,000 course in 13,999. Obviously, if you use the code DivLife or any other faculty's code you would like to use. Ultimate motto is to reduce the fees as much as possible.
So I hope this economics of sociology, or at least understanding the sociological nuances of Study IQ's course from an economic perspective, has helped you to develop a perspective. Yet, if you don't want to join, that's okay. But from this video, what you need to take home is that किसी भी discipline के किसी भी theories को आप real life में apply कर सकते हो. This is something. At least take this approach back home with you. Take care. Happy Raksha Bandhan to all of you. Not only the women would be protected by tying a Rakhi, but the brothers equally should be obliged to their respective sisters, that they largely are entrusted with the faith of their respective sisters. So join the batch if you are interested. Thank you so much. Have a nice day. StudyIQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.